Hello, Bacho. Welcome to Maths by DV. So, in this question, we need to find integration of x into under root 1 minus x square upon 1 plus x square. So, चलिए स्टार्ट करेंगे. The first thing that comes to mind कि चलो बच्चों की x square equal to t assume कर लें. राइट यस कर सकते हैं. राइट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा. बट वी हैव वन मोर easy method. So what we are going to do is x as it is, one minus x square upon 1 plus x square as it is. So multiply and divide by 1 minus x square. राइट कुछ इस तरह से हमें टर्म्स मिलेंगे. चलो तो सिंप्लीफाई करें. देखो बच्चों ये होगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो वी लेफ्ट विथ ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट वी लेफ्ट विथ ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर होगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर into 1 minus x square. This is nothing but 1 minus x raised to 4. A minus b into a plus b, a square minus b square, right? But under root 1 minus x raised to 4. चलो सो यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों. चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें. इससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर पाएंगे ब्रैकेट में. सो व्हाट वी गेट, यस x अपॉन अंडर रूट 1 minus x raised to 4 minus x cube upon under root 1 minus x raised to 4 dx. Right? तो चलो. So in this first part, right, what we are going to do, so in this first part we are going to say this as a I1 and this as a I2 first, right? So here in I1, so in I1 we are going to take x square equal to t. So what we get, 2x dx equal to dt, right? So x dx equal to 1 by 2 dt. चलिए so I1 is nothing but 1 by 2 upon under root 1 minus t square dt. So 1 by 2 and integration of 1 upon under root 1 minus t square is nothing but sine inverse. So this is nothing but sine inverse t plus c1. c1 एक्चुअली दो I1 I2 लिया तो मैंने यहाँ पर c1 अज्यूम कर लिया है, राइट? सो 1 by 2 साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस
C1. So this is nothing but I1. And in I2, हमारे पास क्या है? तो चलो I2 is integration x cube upon under root 1 minus x raised to 4, right? So as we can see here, x cube. So what is differentiation of x raised to 4? 4x cube, right? So what we are going to do here is multiply and divide numerator and denominator by 4. But one more thing we need, yes, we need to differentiate this term, right? So differentiation of 1 minus x raised to 4 is nothing but 0 minus 4x cube. So add minus here as well as here, right? So we know that differentiation of this term is nothing but this, right? Chalo. So first of all, minus 1 by 2 into 2 times 1 minus x raised to 4, and this is d by dx of, right, d by dx of 1 minus x raised to 4. We know that integration f dash x upon 2 root f of x is nothing but root f of x, right? Let's see. So same thing, but here minus 1 by 2. So this is f of x, this is f dash x. So this is f dash x upon 2 root f of x. So we can say that this is nothing but root f of x, means root under root 1 minus x raised to 4 c2. So this is our I2. Now our actual integration is I equal to I1 minus I2. So I equal to I1 minus I2. Chalo. I1 is 1 by 2. 1 by 2 sine inverse x square plus c1, and I2 minus 1 by 2. So this is plus 1 by 2 under root 1 minus x raised to 4 minus c2, right? So final answer is 1 by 2 common, sine inverse x square plus 1 by 2 under root 1 minus x raised to 4 plus c, where c is nothing but c1 minus c2. So basically constant ही है तीनों, तो हम ऐसा लिख सकते हैं. So this is our final answer, right? This is our final answer. So इसे और एक तरह से भी किया जा सकता है कि भाई आप यहाँ से ही x स्क्वायर को t सपोज कर लो, राइट? और सेकंड थॉट ये भी होगा कि आप x स्क्वायर को cos 2 थीटा सपोज कर लो, राइट? तो भी इजीली आंसर आ जाएगा, राइट? सो इन नेक्स्ट वीडियो हम ये सेकंड मेथड से भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू. सो